Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. So we'll be discussing the questions of Indian economy 1. Okay. Okay, so let us begin. Uh, there are quite few concepts which you need to know and we will discuss everything. Okay, so let us start. Question number 1. Question number 1 says that the existence of both rural the term mixed economy denotes. Question number 1. The term mixed economy denotes, it is a very simple question, that in the economy in which there is existence of both private and public sector, जो economy में private sector और public sector both participate करते, that is known as mixed economy. Okay, so answer will be B. Next, which of the following is not a necessary condition for development in India? In economy बहुत एमती क्वेश्चन आसो जोटा कि तुम कॉमन सेंस अप्लाई कर सॉल्व करिवो किसी सेमती सीरियस स्टडी दरकार नहीं तुम जी प्रिपरेशन जी कॉमन सेंस डेवलप होता एज ए वेल रेड पर्सन यू हैव टू अप्लाई दैट to solve the questions. Okay, so the question number 2 says the following not a necessary condition for economic development in India. Okay, capital accumulation, yes, capital accumulation is necessary. Resource recovery is necessary. Population growth is not necessary for development. Okay, although you can say that population growth creates market which creates demand. Population growth है market theory हुए, demand theory हुए, but that is not a necessary condition for development. Okay, and technological development is a necessary condition. Okay, answer will be C. Okay, C. Then question number 3. To achieve high rates of growth on national output, the economy has to. Okay, see, this is a very conceptual question. I need to explain you in the one of the options. Reduced rate of growth of population. Okay, always a reduction in growth rate population does not need to high rates of national output. Borrow foreign capital. You can borrow foreign capital for a limited period of time, but you cannot borrow foreign capital indefinitely for growth. Okay, step up the rates of saving. Not only saving जदि आमे बढ़े दबा ताले पैसा हम पाखे रहइबो, बट हमकु इन्वेस्टमेंट करिया पड़िबो, खाली सेविंग कले हबनी हैला, इन्वेस्टमेंट दरकार, इन्वेस्टमेंट हेले ही ग्रोथ हबो. ठीक अछि, ऑप्शन विल बी डी, बट वी विल सी दैट हाँ येस मुझे जोटा कहली कि आमे खाली सेविंग बढ़े हबनी, हमकु इन्वेस्टमेंट करिया पड़िबो. इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस द कैपिटल आउटपुट रेशियो. एबे इन्वेस्टमेंट आमे जानिले, एबे नेक्स्ट आमे देखिबा कैपिटल आउटपुट रेशियो. अच्छा, इन्वेस्टमेंट जदि आमे बढ़ेले ताले कोन हबो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेले हमर कंजप्शन कमिबो, डिक्रीज इन कंजप्शन. ओके, वेरी गुड कॉन्सेप्ट. देन जदि कंजप्शन कम इन्वेस्टमेंट बढ़िला, इन्वेस्टमेंट जदि बढ़िला ताहले हमर कैपिटल स्टॉकटा बढ़िबो, जो कैपिटल थिबो आमे कोठी अलगा जगह लगे परिबा. जदि कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हला ताहले आउटपुट ग्रोथ इंक्रीज हबो. ठीक अछि, आउटपुट ग्रोथ विल इंक्रीज. ठीक अछि. ओके, एबे हम देखिबा जे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो. डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा रे पड़ी पारे जे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो. ओके, वी विल डिस्कस द कांसेप्ट. सी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो कौन? कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स what the amount of capital needed to produce 1 unit of output. गोटे फैक्ट्री रहा, फैक्ट्री इनपुट दिहला, आउटपुट बाहरला. गोटे यूनिट रो आउटपुट बाहर करिया पई इकोनॉमी रो, एटा मन कर इकोनॉमी. इकोनॉमी कौन? इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ मच मोर फैक्ट्रीज, मेनी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, बहुत फैक्ट्री मिसी की इकोनॉमी अछि. सपोज तमर बुझिया पई कोहा होछि गोटे यूनिट रो
आउटपुट बाहरिया पे केते कैपिटल कंजम्पशन हे दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल आउटपुट रेशियो ठीक अछि ओके सपोज सपोज इन्वेस्टमेंट सपोज आम इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी रे कले इन्वेस्टमेंट इज 32% ऑफ जीडीपी सपोज मु कहली गोटे कैलकुलेशन यदि इकोनॉमिक ग्रोथ है 8% ठीक अच्छे तो 8% ऑफ जीडीपी ठीक अच्छे तो आम कैपिटल आउटपुट रेशियो केमती कैलकुलेट करिया तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल टू 32/8 इक्वल टू 4 ता माने कोन 1 यूनिट ऑफ ग्रोथ पाई आमको 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लगुच दैट मीन्स कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 4 ठीक अच्छे ओके आउट टर्म अच्छी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो व्हाट डू मीन बाय इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो माने इंक्रीमेंटल माने कितने एडिशनल यूनिट लागो द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट आम तो गोटे यूनिट ऑफ आउटपुट काढ़ी देले आउ गोटे एडिशनल यूनिट आउटपुट काढ़िया पे आमको केते लागो एमती भावने कि गोटे यूनिट पे 4 लगी नेक्स्ट भी 4 लगे नो कहीं 4 लगे कहीं ऑलरेडी आम किसी इन्वेस्टमेंट कर देचे घर बन देचे फैक्ट्री खड़ा कर देचे ठीक अच्छे घर तैयारी फैक्ट्री वी हैव मेड द फैक्ट्री तो लेबर फोर्स हाँ लेबर फोर्स आगे खड़े हो गए हैं सब हो गया है ठीक है तो जहाँ भी एक्सपेंडिचर नेक्स्ट यूनिट में लगे सेटा कम लगे डेफिनेटली ठीक अच्छे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो माने 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बाहर करिया पे हमको केते कैपिटल की इन्वेस्टमेंट लागो दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो सो यू हैव टू रिमेंबर टू कांसेप्ट कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ओके ओके very good okay we'll move to the next question national income refers to the monetary value of capital goods and monetary value of goods and services okay national income refers to the monetary value of goods and services produced in a country during a year okay 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 so national income the monetary value of goods and services produced in a country during a year okay answer will be A okay see next question 5 says during which 5-year plan India laid down the objective to needed the environmental sustainability of the development strategy okay national 5-year plan ro sabu plan ro salient points is very important okay actually in 9th 5-year plan there was objective to ensure environmental sustainability through social mobilization okay okay next which plan gave emphasis to removal of poverty very important frequently repeated question it is 5th none other than 5th plan गरीबी हटाओ strategy okay गरीबी हटाओ strategy removal of poverty 5th plan
It is 1974 to 1979. Okay. Okay. Next, the main difference between the gross domestic product and gross national product. Okay, what do you mean by gross domestic product and gross national product? Okay, see, the difference between GDP and gross national product is that the net foreign income from abroad, that is called as NFIA, net factor income from abroad. Okay, आम जो जीडीपी सपोज आम जीडीपी कैलकुलेशन कले किंतु गोटे कंट्री किसी लोक आसी बाहर आम इंडिया रे काम कर आम इंडिया किसी लोक जे बाहर काम कर ठीक अच्छे तो एमाने बाहर किसी लोक जो आम इंडिया काम कर इनकम दौरान आमर इंडिया जो लोक बाहर जाए कम कर इनकम दौरान ठीक अच्छे ता दीटाकर नेट आम कैलकुलेशन करवा जीडीपी रे आम ऐड करवा ऐड कला आम पाइबा कि नेट फैक्टर इनकम अब्रोड जीडीपी सहित नेट दीटा एडिशन हेले आइदर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ को कहुए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ओके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो आज आइदर एटा पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो यहाँ आम जीडीपी रे ऐड करदे आम पाइबा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज GDP plus NFIA net factor income from abroad. Option B. Gross domestic product of a country is the gross domestic product of a country is the total value of economic transactions done within a country within actually the yes actually this is not economy transactions, this is the monetary value of goods and services. Okay, the monetary value of goods and services produced within a country within a year. Okay, there are three parts to calculation of GDP. One is monetary value of goods and services produced within the territory, okay, then time period within a year. ये तीनटा पार्ट जीडीपी अच्छे ठीक अच्छे ओके सो ये कौन सी ऑप्शन भी नहीं नॉन ऑफ द अबव विल बी द आंसर ओके ओके नेक्स्ट next we will see the question that the 12th 5-year plan focused on inclusive growth. Which of the following is considered as challenges for inclusiveness? Simple question. You have to know. The 12th 5-year plan focused on inclusive growth. Which of the following considered as challenges for inclusiveness? Poverty, yes. Group inequality, yes. Regional imbalance, yes. Unemployment, yes. Answer will be ABCD. All are the challenges for inclusive growth. Okay. Next question. Okay. All are challenges for inclusive growth. Okay. Which of the following 5-year plans had a priority to bring inflation under control and to achieve stability in the economic situation? Okay. See, fifth plan also had a objective to bring inflation under control. Okay, 1974 to 1979 हम जो plan हमें देखते कि गरीबी हटाओ was the objective. Okay, okay. ठीक है. Who prepares national income of India? It is prepared by Central Statistical Organization. Okay, factual question you have to know. CSO, Central Statistical Organization. Okay. Okay. Then the economic growth is said to be inclusive.
केतेबेले आमे गोटे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव कहबा इट जनरेट्स मोर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे इंक्लूसिव ग्रोथ कैलकुलेशन हुएनी it creates economic opportunity along with ensuring equal access to it very good it causes largest segment of people to remain outside the mainstream of economy no it earns the highest share of gross domestic product from service sector no inclusive growth means सबु sector ru income होतबो maximum people mainstream economy भीतर थिबे and mostly economic opportunity along with equal access that is the best definition of inclusive growth now for this question. Okay, next, which of the following best explains the stated broad vision and aspiration of 12th 5-year plan 2012 to 2017? See, the 12th 5-year plan objective theme of the 12th 5-year plan is the option A, faster, sustainable and more inclusive growth. This is the theme of 12th FYP. Okay, this is the answer. Okay, what is the theme of the 11th 5-year plan? Sustainable and more inclusive growth. Okay, faster नथला, faster टा 12th रहतला, 11th रो कौन theme थिला C. Okay, this can be asked. Okay, growth. Next question, growth with social justice and equality was the focus of. Okay, growth with social justice and equality was the focus of 9th 5-year plan from 1997 to 2002 during the prime ministership of Atal Bihari Vajpayee. Okay, next, in its emphasis on enhancing human capabilities, which one of the following does not figure in the 12th 5-year plan? Okay, 12th 5-year plan: education, public service delivery, skill development, life longevity is not a part of 12th 5-year plan. Answer is A. Which of the following sector contribution lowest to India's GDP? Okay, remember the facts that our service sector contributes maximum, it is nearly 54%. Okay, secondary sector or industry sector contributes 26%, primary sector or agriculture allied sector contributes 20%. Okay, 54, 26, 20. Answer will be A. Which of the following organization calculate the GDP of India? See, one of the important question. जदि ऑप्शन रे अछि आमे गोटे क्वेश्चन आगु कले कि जदि ऑप्शन रे अछि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यू गो फॉर दैट अदर जदि ऑप्शन अछि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट विल बी द आंसर. ओके, काहे कि ना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज क्रिएटेड आफ्टर मर्जर ऑफ दी जिनस मिसी गले एनएसएसओ आगु थिला प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस थिला दीटा मिसी गला परे 2019 रे गवर्नमेंट क्रिएट कला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ओके, and it is under Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay, answer will be A. जदि CSO अछि NSO नाही ताहले CSO मारिबो, जदि दीटांग ऑप्शन अछि NSO मारिबो. ठीक अछि. ओके, प्रधानमंत्री जन धन योजना has been launched for. Pradhan Jan Dhan Yojana has been launched for financial inclusion, simply promoting financial inclusion in the country. What is Mudra? Next, Mudra is micro unit OPS report micro unit development and refinancing agency. Micro unit development, MU for micro unit, DRA development and refinancing agency. Okay, it was established in 2015. Okay, and तार काम कोन काम होची to loan दबो. काहाकु लोन दबो? To give loan at low interest rate. Okay, to give loan at low interest rate to whom? To non-banking financial corporations, okay, etc. Okay, microfinance institutions किंबा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ए माननकु लो इंटरेस्ट रे लोन दिए मुद्रा. ओके, ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट which of the following area make largest contribution to national income? We have already read it. Service 54%. Stand Up India scheme was launched by Prime Minister recently, is related to
it is stand up India to promotion of entrepreneurship among SC ST women. Okay, simple question. How do you calculate the poverty line? Poverty line is calculated by income of an individual under a threshold value published by Government of India. Poverty estimation committee जो इनकम वैल्यू थ्रेशोल्ड इनकम थ्रेशोल्ड डिसाइड करछंती सेही बेसिस रे poverty line calculation हुए. Okay, income of individual less than 50 rupees, no. Average income, no. Family 100, no. Okay. Next, development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. The focal point of Brundtland Commission, sustainable development. Sustainable development, Brundtland Commission. Okay, very important. All question पचारुचे Brundtland Commission. Okay. So Brundtland Commission report ना कौन थिला? The report name was called as Our Common Future. Okay, it was published in 1987. Okay. Gross domestic product is a measure of gross domestic product. That means country's domestic economic activities, as simple as that. Okay, जदि आम इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी कैलकुलेशन करछे आम कोन करबा कहितली जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू जीएनपी, as simple as that. Okay, next. Next, the community development program was launched in the year. Factual question, community development program 1952 रे launch हेतला. The focus was on the development of the rural community development focus thila community development program ro. Optimum utilization of physical and human resource, optimum utilization करिया पई objective thila. 1952 will be the answer. Slogan गरीबी हटाओ, fifth plan पढ़िले. What is the motive of third 5-year plan in India? Third 5-year plan in India was development of an independent economy. Okay, independent economy, agriculture or independent economy. Third 5-year plan was from 1961 to 1966. Okay, then aimed at increase production of wheat. कहीं ना चाइना वार 1962 रे तो 1962 रे चाइना वार हेतला. Okay, so this was the objective of third 5-year plan. Independent economy में करिया. ठीक अछि, that was the objective. Okay, which of the following is the correct definition of economic growth? Economic growth रो definition होची increase in per capita real GDP over time. देखो, increase in productivity of labor, खाली labor productivity economic growth रे जाउनी हबनी. Increase in productivity of manufacturing sector, not only manufacturing sector को जाउची, service भी जाउची, agriculture भी जाउची. Increase in GNP, only GNP growth आमे कहि परिबानी. काहे कि ना मु कोन कहली GNP also includes factor income from abroad. So increase in per capita real GDP over time माने हमर population. Okay, population count कले. Okay, GNP कोन population count करछे करने तो population count कले plus GDP count कले हले GDP count कले that to put real GDP. What is the difference between real GDP and nominal GDP? Nominal GDP that includes inflation, but real GDP does not include inflation. Okay, ठीक अछि, and that those are calculated according to the base year. Okay, so यदि per capita real GDP increase होची, that is the correct definition of inclusive growth, definition of economic growth, because it includes population as well as real GDP. Okay. The Pura scheme. Pura. What do you mean Pura? Pura means provision of urban amenities in rural areas, conceptualized by Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, ठीक अछि. Okay,
माने this is पूरा scheme was the one of the step towards you can say sustainable urbanization. Okay, okay. So next 30 self reliance was the main objective of. Okay, see आमे कौन कहले थर्ड 5 ईयर प्लान ने कौन होइतला थर्ड 5 ईयर प्लान ने आमे करतले ऑब्जेक्टिव था स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डायनामिज्म. ओके, इकोनॉमिक डायनामिज्म. ओके, देन what are the fifth रे हम जान ले कि पॉवर्टी रिमूवल, पॉवर्टी, सेल्फ सफिशिएंसी. सिक्स्थ रे कौन होइतला सिक्स्थ रे होइतला सोशल जस्टिस. पढ़िले सोशल जस्टिस. ओके, अटल बिहारी वाजपेयी टाइम रे जोटा होइतला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सोशल जस्टिस एगुड़ा सब मॉडर्नाइजेशन. ओके, so self reliance self reliance भी थिला इतरे. self reliance was the main objective of sixth 5 year plan. Okay, okay. Antodaya program was associated with Antodaya program is associated with upliftment of the poorest of the poor, upliftment of the poorest of the poor. Okay, Antodaya program. Okay, Antodaya जो माने लास्ट रचंती. Okay, last man in the queue. Simple question. Who among the following is not a part of governing council of Niti Aayog? Recently OPSC question. All the chief minister of the state are members of the governing council. All chief minister of Delhi and Puducherry also member. Governor of the states are not members. Okay, lieutenant governors are members. Okay, executive head जो मान अछंती they are the members. Okay, okay. Now which of the following is the specialized wing of Niti Aayog? Research wing yes, consultancy yes, team India wing yes. Okay, समस्ते मिसी कौन करती तार ऑब्जेक्टिव इज टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट एंड कंसल्ट with the ministries of the central government and state government. Answer will be 1 2 3. Next, which of the following is not a function of Niti Aayog? Evolve a shared vision of national development priority sectors and strategies. Yes. Cooperative federalism. Yes. Give final approval to 5-year plans in India. No, 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 because 5-year plan approval इंडिया रे आगुरु की दउथला NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. मन रख क्वेश्चन पढ़ी पारे. टू क्रिएट ए नॉलेज इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम. नो. ओके, yes, that is the objective. This is not the objective. Okay, that means the C will be the answer. Which of the following is not a feature of Indian planning? Development planning, indicative planning, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग. आम प्लानिंग सेंट्रलाइज नुह. एमती ना कि जड़े बसिकी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली रे बसिकी प्लान करुच्ची आउ सेटा इम्प्लीमेंट होची. नो, वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम. ओके, ओके. ग्रांड इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय इट वाज नॉन ऑफ द नीति आयोग. सिंपल क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग? फिजिकल प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आवर फीचर. Okay, none of the above. No, this is the answer. Okay, these three are the features. All are the features. Economic planning refers to अच्छा मत दी टाइम समय देखी दवा. इंडिकेटिव प्लानिंग माने कौन? व्हाट डू मीन बाय इंडिकेटिव प्लानिंग? इंडिकेटिव प्लानिंग कौन? इंपरेटिव प्लानिंग कौन? ओके, इंडिकेटिव प्लानिंग माने होची इट इज मोस्टली फाउंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ए मानकर देखा जाए इंडिकेटिव प्लानिंग. इंपरेटिव प्लानिंग माने होची सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. आम इंडिया सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नाही तो आम इंपरेटिव प्लानिंग नाही, आम इंडिकेटिव प्लानिंग अच्छी. ठीक अच्छे. ओके, ओके. देन एटी कौन मेनली गवर्नमेंट ही डिसाइड करिवो. इंपरेटिव प्लानिंग सेंट्रलाइज प्लानिंग रे गवर्नमेंट विल डिसाइड. गवर्नमेंट देखिवो कौन सिचुएशन अछि ताले डिसाइड करिवो. ठीक अछि. बट मिक्स्ड इकोनॉमी रे वी आर फॉलोइंग इंडिकेटिव प्लानिंग. ओके, ओके. इकोनॉमिक प्लानिंग refers to economic planning refers to
So economic planning refers to the only planning means you are allocating the resources. Okay, planning means you are allocating the resources. Okay, so then Pradhan Mantri Mudra Yojana is a flagship scheme under the government to fund the unfunded. What is the full form of Mudra? We have already seen. Micro Unit Development and Refinancing Agency. Restructure no, refinance. Okay. Which of the following committees recommended a poverty line based on nutritional requirement exclusively? Previous question, it was none other than YK Alga Committee. Okay. देखो YK Alga Committee was set up in 1977. Okay. तार ऑब्जेक्टिव कौन था? फूड इनटेक क्राइटेरिया. ओके 2400 किलो कैलोरी पर पर्सन इन रूरल एरिया देन 2100 किलो कैलोरी पर पर्सन इन अर्बन एरिया. ओके देन 19 लकड़वाला कमिटी केबे हला? लकड़वाला कमिटी हला 1989 रे. ओके 1989 रहला. ठीक अछि. तो 1989 रे प्रॉब्लम कोन हला? अलगा कमिटी रे प्रॉब्लम ए हला कि अलगा कमिटी स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया किछि फिक्स करनतला. तो कहीं ना इन्फ्लेशन हेले कंजप्शन बास्केट रो प्राइस बढ़ी जीवो. ठीक अछि. तो लकड़वाला कमिटी कोन कले नेशनल पॉवर्टी लाइन तांको स्टेट स्पेसिफिक वन कर देले. जे मध्य प्रदेश रे एया, गुजरात रे एया, ओडिसा रे एया, बिहार रे एया, स्टेट स्पेसिफिक लकड़वाला कमिटी. ठीक अछि. तापर आसले सचिन तेंदुलकर. नो, दिस इज नॉट सचिन तेंदुलकर, दिस इज the Tendulkar committee. It was in 2005. Okay, it was in 2005 and Tendulkar committee hela kon. Then 2005 re the Tendulkar committee drawn a poverty line that was still we are using that the poverty line based on the Tendulkar committee report. Okay, then asile ame Rangarajan committee. It was in 2012. Okay, एटा पढ़ी पारे एग्जाम रे सब. अलगा कमिटी केबे हितला? लकड़वाला कमिटी केबे हितला? ओके तेंदुलकर कमिटी केबे हितला? रंगराजन कमिटी केबे हितला? 2012. ओके देन Rangarajan committee we had in 2012. Okay, we'll discuss. See, so yes, see, what is the basic difference between these two? That basic difference between your Tendulkar committee, that is called as Suresh Tendulkar committee. Okay, and then Rangarajan committee. Okay, they both were set up by planning commission. Okay, both were set up by planning commission. This was in 2005 and this was in 2012. Okay, criteria कौन थला? तेंदुलकर कमिटी रो क्राइटेरिया थला मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. ओके, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. बट रंगराजन कमिटी कौन थला? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर ए फैमिली ऑफ 5. 5 जणिया फैमिली रो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर केते होची? That was the basis of your Rangarajan committee. Okay, then urban रे कौन थला? urban रे तेंदुलकर कमिटी कौन कले? तेंदुलकर कमिटी कहले urban रे कहले जे हमर 32 रुपीस पर पर्सन पर डे हेले आमे आमे दैट सेटा ताको पुअर कहबानी. ठीक अछि. देन रंगराजन कमिटी कहले इट इज 47. ओके, देन रूरल रे
ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି କଲେ 27 ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଇନକମ୍ କରୁ ତାକୁ ଆମେ ପୁଅର କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି କଲେ 32। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ପର କ୍ୟାପିଟା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ 5, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ତ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି 33 ହେଉଛି ତାହେଲେ 1 ମନ୍ଥରେ କେତେ ହେବ? ନିୟରଲି 1000। ତ ଏଇଟା ମନ୍ଥରେ କେତେ ହେବ? ନିୟରଲି 14,000। ଓକେ, ସରି 1407, ନିୟରଲି 1400। ଓକେ, ସୋ ତ ଯଦି ଆମେ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟିଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ହେଲା ପର ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଛା ହେଲା 1400, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ 5 କେତେ ହେବ? 5 ଜଣିଆ ଫ୍ୟାମିଲି। ଓକେ, ନିୟରଲି 7,000 रुपीज। ओके, ताମାନେ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି କଲେ ଯେ ମାସକୁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ 7,000 ଟଙ୍କା କମାଉଛି ସିଏ ପୁଅର ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି କହିଲେ ଯେ 33 रुपीज ଯେ କମାଉଛି ପର ଡେ ସିଏ ପୁଅର ନୁହଁ, ତାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା 1000 ଟଙ୍କା। ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି କହିଲେ କି 47 रुपीज ଯିଏ କମାଉଛି ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ସିଏ ପୁଅର ନୁହଁ, ତ ତାର ମନ୍ଥଲି ହେଇଗଲା 1400। ଯଦି 5 ଜଣିଆ ଲୋକ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି 7,000 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସେମିତି रूरल एरिया रे कौन हम? रूरल एरिया तेंदुलकर कमिटी कहले 27 रुपीज पर डे, रंगराजन कमिटी कहले 32 रुपीज पर डे, ठीक अच्छे। तो ये 27 हेले मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमिटी कौन है? 27 इंटू 30 816 रुपीज। आंकर सेमती 32 इंटू 30 नियरली 970। देन जदि आम 5 जणिया फैमिली एस्टिमेट करिया, रंगराजन क्राइटेरिया होची 5 जणिया फैमिली, तो जदि आम एस्टिमेट करिया दैट इज नियरली 480 48060 माने 4860। ओके, so this is the understanding. Okay, so we'll discuss then. Now which committee was set up to review the concept of poverty line? Suresh Tendulkar committee. Okay, you all know. Okay, ठीक अछि। हाँ, आउट क्वेश्चन रहा ये कि absence of minimum income to get the minimum needs of life is considered with which type of poverty? Okay, that is called as जदि जने तार मिनिमम इनकम भी एस्टिमेट करी पारु नाही, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, माने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बंची परने, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी डेफिनेशन ही सेया, ठीक अछि। ओके, देन सुरेश तेंदुलकर कमिटी हम जानले। देन 43 unemployment and poverty estimates in India are based on NSSO household consumption expenditure survey। ओके, ठीक अछि। ओके, एबे NSSO एंड CSO मर्ज हिची नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, ठीक अछि। नेक्स्ट, which of the following methods have been used to estimate poverty in India? Okay, poverty estimation by India रे we are head count ratio we are using। okay, calorie intake आमे यूज करछे, household consumption expenditure भी यूज करछे, per capita income we are not using। okay, we are not using per capita income, आमे expenditure criteria यूज करछे, monthly per capita expenditure for a family of 5 किंबा monthly per capita expenditure, ठीक अछि। इनकम क्राइटेरिया में करूना है। ओके, नहीं, poverty estimation in India is carried out by नीति आयोग टास्क फोर्स। एबे नीति आयोग टास्क फोर्स ही करूची, ठीक अछि। दैट इज आगुरु आमे नेशनल स्टैटिस्टिकल, these two have been fused and formed as national statistical organizations। okay, okay, what is the BPL percentage in India as for 2011 census? It is nearly 22%। okay, factual question, which of the following fixes the poverty line in India? Planning Commission, now it is known as Niti Aayog। okay, mitigating the poverty in western Rajasthan Empower is being implemented with the help of IFAD। okay, ठीक अछि। Then which expert group recommended including education and health in the poverty line basket along with food?
दैट इज तेंदुलकर कमिटी ओके तेंदुलकर कमिटी माने कहले कि तुम खाली फूड रे कहीं वाई के अलगा कमिटी कौन करते वाई के अलगा कमिटी कहले आम कैलोरी क्राइटेरिया करवा कैलोरी मैंने फूड क्राइटेरिया तो तेंदुलकर कहले ना तुम खाली फूड जड़े पाऊनी माने सी कौन पुअर सेमती ना जहाँ एजुकेशन मिलूनी जहाँ हेल्थ मिलूनी सी भी पुअर तेणु तेंदुलकर कहले आपको भी इनकम कर माने इनक्लूड कर ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट द प्रमोशन ऑफ people below the poverty line of India is estimated by okay the this is proportion this is not promotion the proportion of people okay proportion of people uh, below the poverty line is estimated by a ratio of ratio now that means BPL is estimated see suppose this is the BPL line below poverty line मन एति x number of people are below poverty line so आमे proportion केमिति estimate करबा x by total population into 100 कि नहीं हेले परसेंटेज पळे आसीबो ठीक अछि सेइटा ही पचारे हला the ratio to the number of total population to the number of people below the poverty line okay proportion of people below poverty line estimated by but option there is some uh, the correction of the words need to be there I will do it okay so okay answer will be B just remember the concept कि एटा यदि below poverty line हला ता तळे यदि x number of people अछंती तो हमर proportion हम केमति estimate करिया x divided by total population into 100 जेति कि proportion आसिला परसेंटेज आसिला हम सेटा सेति कहले कि एति कि हेले माने below poverty line रहिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन poverty gap कोन सेमति मन कर this is poverty line this is poverty line नॉल BPL poverty line तळे जिरले समान होजन BPL ओके this is poverty line suppose this is poverty line तो हेला परे suppose मु BPL रे अछि below poverty line अछि तो जदि मु below poverty line रे अछि आई एम वेरी अनहैप्पी जदि poverty line 5 rupees मोर इनकम होछि 2 rupees ठीक अछि तो मते आउ 3 टंका जदि तमे धार दबो ताहले मु कोन करबी poverty line को क्रॉस करि जिवि ठीक अछि तो आउ जेति कि हेले मु ऊपर को जिवि दैट इज कॉल्ड एज poverty gap ओके तो poverty gap रिफ्लेक्ट करे कि डिफरेंस बिटवीन poverty line ऑफ एक्चुअल इनकम टू दोज लिविंग बिलो poverty line ठीक अछि तो एक्चुअल इनकम केते बिलो poverty line केते अछि ओके दैट रिफ्लेक्ट्स इंटेंसिटी ऑफ poverty ओके intensity of poverty okay
Next is the multidimensional poverty includes health, education, living standard, everything. Okay, health रे nutrition, child mortality सब रोची, education ने years of schooling, attendance वाला सब रोची, living standard, cooking, sanitation एवढा सब रोची, तो everything. Okay, D 1 2 3 both are correct. Type of unemployment, agriculture sector. If India more people are employed than that is required, it is known as disguised unemployment. Agriculture sector mainly disguised unemployment ଅଛି. Okay, option A. Many workers have lost their job due to industrialization of computers which they do not know how to operate. जदि आमे गोटे स्किल दरकार मार्केट रे आमे से स्किल जानी ने, ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. जदि आमे से स्किल जानी आमे एम्प्लॉयड ही परिबानी, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, ठीक अछि. ओके, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट माने बिजनेस साइकिल को फॉलो करियो. जदि प्रोडक्शन हो प्लॉयमेंट बढ़ियो, प्रोडक्शन कमिला एम्प्लॉयमेंट कमिबो. ओके, people who are only willing to work at the existing wage rate. जदि मते गोटे जॉब भल लागलानी कि पैसा कम मिलुची, मु जॉब छाड़ देली. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. माने कोन, मते इच्छा नै करिया पे मु अनएम्प्लॉयमेंट, आई लेफ्ट ए जॉब बिकॉज लो सैलरी, आई एम सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब. ओके, दैट इज कॉल्ड एज also called as search unemployment. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलर सीजन रे अनएम्प्लॉयमेंट हबा. ठीक अछि. ओके, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, open unemployment माने होची people are willing but do not get work, that is called as open unemployment. Phillips curve, you have to remember that Phillips curve is the curve between your inflation and unemployment. Okay, inflation और unemployment भितरे curve टा को Phillips curve. Okay, what do you mean stagflation माने हाई इन्फ्लेशन थी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दीटा थी. ओके, हाई इन्फ्लेशन थी प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन. ओके, नेक्स्ट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहली कि जदि अधिका जति दरकार ताटो अधिका एम्प्लॉयड अछंती, जदि सेमती हुए ताले कोन हबो, मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर वुड बी जीरो, माने काम करियो किंतु प्रोडक्टिविटी किछ नै. ओके, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मीन्स, okay, next, the most appropriate measure of a country's economic growth is its per capita real income. Real income per capita is the better measure. कहीं की ना standard of living भी सेतरे measure होची. Real capita per income माने होची average income by a person per year. Okay, okay. Then Hindu rate of growth माने कौन, Hindu rate of growth माने low annual growth rate. Okay, इकोनॉमिक रिफॉर्म आरंभ होगा पूर्व आमर ग्रोथ रेट बहुत स्लो थिला. ओके, सही स्लो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ताकू कुआ जाए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. ओके, ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन मेनली रिस्पांसिबल फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इन इंडिया. कोटा कोटा स्लो ग्रोथ करूची, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन करूची, रैपिड राइज इन प्राइसेस नो, स्लो पेस ऑफ प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नो. सो 1 and 2 will be the answer. Okay, so 1 and 3 will be the answer. Okay, खाली प्राइस राइज हेले स्लो ग्रोथ हो सेमती किछि नाही. ठीक अछि. ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड योर national income per capita in US dollar, that is called as GNI, gross national income per capita in US dollar. Okay, okay. Then the growth rate of real per capita income at current prices is higher than that of per capita income at constant price because the latter take into account the increase in price level. Okay, actually the see, the per capita income at current price divided by per capita at constant price. Okay, that is called that this per capita income at current price is higher because it takes into account the rate of inflation. Okay, okay, former current price टिके higher था. ठीक है. Okay,
Next, which is the final authority of India to approve the 5-year plans? It was the National Development Council. Okay, not now. Which 5-year plan gave emphasis to cooperative federalism? But the 9th 5-year plan. Okay, also 5-year plan 9th 5-year plan cooperative federalism thila plus women empowerment भी thila. Women empowerment dita component thila. Match the least and the two. See, first plan community development. Okay, second plan you have rapid industrialization. तापर focus कर रहा industrialization ଉପରେ. Third plan you have expansion of basic industry. Okay, then fourth plan you have achievement of self reliance. Okay, then fifth plan you have minimum needs program. Okay, ठीक है. Planning from below is known as decentralized planning. जानिए already. Which 5-year plan? The participation of women component was added. I'm probably 9th 5-year plan. Okay, okay. Which of the following known as great divide with regard to population growth? That is 1921, year of great divide. Okay, remember this, year of great divide. Okay, okay. Then next, India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to माने हमरो अधिक एज ग्रुप हमर अछंती 15 to 64 year population अधिक अछन 15 to 64. ओके, तो 15 to 64 जतिक रहिले डिवाइडेड बाय रेस्ट माने लेस देन 15 और मोर देन 64 एटा कहजे डिपेंडेंस रेशियो मन रख डिपेंडेंस रेशियो. ओके, ठीक अछि. Which was the sustainable development? Where was the sustainable development explained for the first time? I'm Podile Brundtland Commission report. Agenda 21 of Rio Summit is related to sustainable development. Agenda 21 environmental पढ़ियो Agenda 21. Okay, preservation of ozone layer is Vienna Convention. Vienna Convention in 1987. Okay, okay. Okay, 1992, that is called as UN Conference on Environment and Development. 1992. Right? At the central level, which agency was assigned overseas of the implementation of Sustainable Development Goal? Niti Aayog. Okay, okay. With reference to CAG is a constitutional body. Okay. Energy Research Institute कोठी अछि? The Energy Research Institute, New Delhi. With reference to the United Nations Sustainable Development Goal, which of the following is the Sustainable Development Goal 10? Just remember the basic important Sustainable Development Goal. First 5 कौन? First which is no poverty, second which is zero hunger, third which is good health. जनकर poverty नहीं, second hunger भी नहीं, तार 3 नंबर तार good health पड़े असला. 4 नंबर जदि गुड हेल्थ पढ़ा से क्वालिटी एजुकेशन नब क्वालिटी एजुकेशन हेले तार जेंडर इक्वालिटी आसो गोल नंबर 5. ओके, तो क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी आसला से समस्त मिसी सैनिटेशन पे काम कले 6. ओके, सैनिटेशन होला पर से कहले हम क्लीन एनर्जी नबा 7. ओके, so these are the goals. Okay, okay. So SDG 10 is reduced inequality. Remember this. Okay, officially India's GDP kono? National income is also known as NNP is calculated based on factor cost. Okay, you know GDP at market price plus subsidy minus tax equal to GDP at factor cost. Okay, okay. Which of the following is measured by Lorentz curve? Lorentz curve is income inequality. Okay, different curve you have to remember. हमें Lorentz curve गोटे पढ़ले income inequality. Phillips curve is between your unemployment and inflation. Okay, Phillips between unemployment and inflation. Then you have Kuznets curve. Kuznets curve is between growth and inequality. Okay, then one curve is Laffer's curve. Laffer's curve is the relationship between taxation, rate of tax and revenue. Rate of tax and revenue. Okay, okay. Consider the following statement: nominal GDP is
calculated based on current prevailing prices. Real GDP calculated based on concept of constant prices. True. Nominal GDP of country always greater than real GDP. No. जदि inflation अधिक हला ताहले कहीं ना real GDP रे आम जदि inflation मिसे दबा ताहले वो nominal GDP कॉन्सेप्ट बुझ जदि इन्फ्लेशन अधिक हला ताहले नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी अधिक हबो जदि इन्फ्लेशन कमी गला नेगेटिव हला ता माने नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी कम हबो ओके सबले अधिक हबो किछि माने नै वन ओनली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय एडजस्टिंग इट फॉर नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड आम ऑलरेडी कैलकुलेट करि साली छे ओके ठीक अछि द टर्म बेस ईयर रिलेशनशिप इन जीडीपी इज एप्लीकेबल टू द ईयर इन व्हिच प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी ओके जो ईयर आमर बेस ईयर केते 2011 12 ओके व्हिच द फॉलोइंग वुड इंक्लूडेड इन इंडिया एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी ओके कोटा इंक्लूड हबो सैलरी ऑफ ए पर्सन इन इंडिया वर्किंग इन यूएस कहीं से जीडीपी रे इंक्लूड होबनी कहीं इंक्लूड होबनी कहीं से इंडिया टेरिटरी भीतर काम करूनी प्रॉफिट अर्न बाय जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया यस हबो प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान नहीं हबनी ओके ओनली 2 टेरिटरी भीतर जे नाही से जीडीपी कैलकुलेशन इंक्लूड हबो नाही किंतु जीएनपी कैलकुलेशन इंक्लूड हबो ठीक अछि ओके 81 the consider the following gross value added at basic prices excluded production taxes and include the production subsidy available in the commodity wrong because see GVA gross value added at basic price okay gross value added at basic price just a minute so gross value added at basic price equal to gross value added at factor cost plus production tax minus production subsidy. This is the formula. Gross value added at basic price equal to gross value added at factor cost plus production tax minus subsidy. Tax मिसियो subsidy minus होगा ठीक अछि तो gross value added basic price excluded production tax में included production tax and excluded production subsidy okay so this is wrong gross domestic product at market price GDP at market price okay equal to GVA next step GVA बाहर कर देले GVA रे हम कोन कले GDP at market price पाइबा GVA at basic price एटा plus product tax this is production tax this is product tax minus product subsidy ठीक अछि GDP at market price includes both production tax includes both production and product tax काहे ना एटा GVA रे इंक्लूडेड अछि एतिको तमे प्रोडक्ट्स GDP at market price रे GVA भी रहला तो GVA रे जदी प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड अछि ता माने GDP at market price रे प्रोडक्शन टैक्स भी रहला प्रोडक्ट टैक्स भी रहला प्रोडक्शन टैक्स भी रहला दिटा अलग अलग ठीक अछि ओके रीड द बेसिक इन द डिटेल्स अबाउट नेशनल इनकम ओके ओके ठीक अछि द आंसर विल बी बी gross domestic product of a country is total net domestic product and its consumption of capital in the production process कहीं ना GDP और NDP भीतर production difference कौन okay depreciation so GDP minus depreciation just pardon me for my bad handwriting GDP minus depreciation equal to NDP net ओके सो डेप्रिसिएशन माने कोन आमे गोटे मशीन चलेले से मशीनटा खाई गला जंग लग गला फिर ठीक से काम कलानी जो वैल्यूटा कमले दैट इज डेप्रिसिएशन सो दैट इज कंजम्पशन ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ओके ठीक अछि ओके द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम इंक्रीज इन द पर कैपिटल प्रोडक्शन इंक्रीज इन द पर कैपिटल इनकम एवरीथिंग ऑल ऑफ द अबव ओके इकोनॉमिक ग्रोथ Next, the increase in national income of a country due to an increase in prices is known as increase in nominal national income. कहीं ना देखो always nominal term टा include करे inflation. किंतु जब हमें real calculation करते real GDP calculation करते हमें nominal GDP रू inflation को minus करते. Okay?
nominal GDP minus inflation adjusted to inflation, it is real GDP. Okay, तो inflation जो रहिला माने nominal income ताको हम कहबा, ठीक अछि. Okay, 85. In the division of labor according to Adam Smith, it is limited by. Adam Smith कोड बही लिखितले से बही ना कोन? Wealth of the nation. Wealth of the nation. Okay. So division of labor is limited by size of the quality, size of the labor force, then quantity of capital available in the market, extent of the market. See, labor size of the labor force is not division of labor is not dependent on the size of the labor. Okay, quality of capital केते available अछि market रे में division of labor माने कोन? division of labor माने होछि कि को काम करिवो हला 100 लेबर अछंती 1000 लेबर अछंती सेटा कोन डिपेंड डिसाइड करिवो कि मु काहा को काम देबी काहा को काम दिया हबो सेटा डिपेंड करे मार्केट रो डिमांड कोन अछि सी कोन स्किल रखिछि मो पाखरे कोन मशीन अछि क्वालिटी ऑफ कैपिटल कोन अछि मार्केट रे एक्सटेंट ऑफ मार्केट कोन अछि एटा ही डिपेंड करे तमरो division of labor केमते हबो. It does not depend upon whether there are 1000 labor or lakhs of labor or hundreds of labor. Okay, ठीक अछि. तो आंसर will be D. Which of the following agency responsible computing national income statistics in India? You know, Central Statistical Office. जदि ऑप्शन नाही ताले National Statistical Office will be the better answer. Okay, okay. Which of the following is an indicator, not an indicator of economically developed nation? Economically developed nation रा indicator कोटा नुह. High rate of literacy, yes. Low death rate, yes. High per capita income, yes. High proportion of labor in primary sector, नहीं. जे develop हो तारा primary sector कम लोग रहिबे, secondary tertiary sector अधिक लोग रहिबे. ठीक अछि? Okay. Which of the following are main causes of slow rate of growth of per capita income in India? High capital output ratio, yes. आमर high capital output ratio कहितले, capital output ratio अधिक अछि माने आमर growth कम होछि. High rate of growth of population, yes. High rate of capital formation, आमर इंडिया रे capital formation अधिका जदि अधिका हुए ताले स्लो रेट ऑफ ग्रोथ काहे हबो कैपिटल फॉर्मेशन अधिका माने हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हबो ठीक अछि हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज नॉट रिलेटेड टू directly not related to economic growth. So answer will be A, 1 and 2. Okay, okay. Next, the in India GDP is higher than GNP because I'm formula कहतली GDP plus net factor income from abroad equal to GNP. तो GNP जो net factor income टा जदि पॉजिटिव हैला जो 10 टंका हैला ताले GNP टा अधिक है जो जदि नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव है -10 है जीडीपी रु माइनस जो माने जीएनपी टा कमी जीवो जीडीपी टा अधिक है जीवो ठीक अछि तो इन इंडिया जीडीपी इज हायर देन जीएनपी बिकॉज नेट फैक्टर इनकम इज नेगेटिव हमर नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव ता माने आमे बाहर जति इनकम पाउचे आमे बाहर को अधिक इनकम दउचे ठीक अछि ओके नेक्स्ट द नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड थ्रू production income method these are methods of production of national income production method and income method okay ठीक अछि 91 estimation of national income in India difficult due to illiteracy, non-monetized consumption, people holding multiple jobs. Yes, okay. Inflation we are calculating. आम इनफ्लेशन टैप जानी पार्चे कैलकुलेशन से किसी प्रॉब्लम ना एगुड़ा सब प्रॉब्लम ठीक अच्छे ओके 1 2 and 4 ओके मैच द लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ओके दादा भाई नारोजी 2 poverty and on British rule in India. Okay, then Prafulla Chandra Ray, PC Ray, the poverty problem in India. Okay, Mahadev Govind Ranade, essay on Indian economics. R.C. Datta, you have the economic history of India. Okay, okay, so
the minimum needs program aims to improve the living condition of the poor and also promote their education and health. Okay, minimum needs program living condition poor living condition बढ़ाया ପାଇଁ and promote education health promote करिया ପାଇଁ. Okay, ठीक अछि. National Development Council ମୁଁ କହିଥିଲି National Development Council approve करे 5 year plan. It was established in 1952. Okay, then economic planning is in the concurrent list, both state and union can plan. Okay, 20 points program was launched in the year 1980. 20 points program. Okay, factual questions. During which plan was the National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD was established to facilitate rural credit and agricultural development? It was in the 6th 5-year plan. 6th 5-year plan and NABARD developed it. ठीक अछि. Economic growth measures GDP at, okay, economic growth measures GDP at constant market price. Remember this, very very important direct question. GDP at constant market price. Okay, next, if India is experiencing economic growth, then which of the following statements must hold true? Okay, real GDP is increasing. Yes, जदि real GDP increase होची ता माने suppose एटा real GDP हैला plus inflation nominal GDP. जदि real GDP constant अछि inflation बढ़िला ताहार भी nominal GDP बढ़ि जिवो. ओके, तेणु आमे खाली nominal GDP देखि कहि परिबनी जे इकोनॉमिक ग्रोथ होउछ बोला. हमु देखिया पर real GDP काहे ना real GDP रे inflation जदि ये 5 अछि ये 15 हे गेला 20 हे जिवो, ये 5 अछि ये 25 हे गेला 30 हे जिवो, ता माने को ग्रोथ हैला. रियल जीडीपी तो से कांस्टेंट अछि ना. ठीक अछि, तो तेणु रियल जीडीपी हम देखिया पड़े. रियल जीडीपी ग्रो करछि ताहले हम कहबा ठीक अछि हां माने इंक्रीज करछि. नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हैला हम कहि परिबानी जे ग्रोथ होउछ बोली. ठीक अछि, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग. यस, जदि रियल जीडीपी रो रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ुछि ता माने हम कहि परिबा इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, सो 1 और 3 will be the answer. Okay, okay, next, if a country is experiencing recession, which of the following shall be true? Okay, रियल जीडीपी जदि कम होछि ताले रिसेशन, नॉमिनल जीडीपी कम होछि रिसेशन हेइ न पारे. ठीक अछि, देखि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी ओनली जीडीपी ग्रोथ ऑफ रेट हम कहबा आइदर रियल जीडीपी हेइ पारे कि नॉमिनल जीडीपी हेइ पारे, जोटा भी हेइ पारे. ठीक अछि, तो रियल जीडीपी जदि ग्रोथ कम हैला ताले हम कहि पारे रिसेशन अछि. ठीक अछि, ओके, so this is all about the discussion sessions. Okay, in economy you should know the basic concept, basic terms and basic concepts. Okay, and solve MCQs. That will be sufficient for economy. Do the previous year questions of the OPSC examination preliminary and related concepts. Okay, not only previous year questions, previous year question kar the related concept bhi dekho. That will take care of your economy part. ठीक अछि, okay, so thank you for attending the discussions. Have a nice day. Bye bye.